गा बोले लेट जो कुशाग्र. कोयल बागों में है, बोले जो कोयल बागों में, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। राइडो भी भीगा हो गया ये सॉन्ग सुन के। हाला फॉर अ रीजन. क्या आपको मेरी खुशी दिख रही है? क्या आपको चेन्नई टॉप 4 में दिख रही है? डू यू सी आरसीबी विनिंग दिस सीजन? If the above questions are answered as no, we'll have a detailed discussion with I our have one usual more question. suspects. I have one more question. Do you think this is Mahendra Singh Dhoni's last IPL season? No, we have our usual suspects, Naman Mehta, Kushagra Aswani. Two games to talk about today. Both were a run feast. दोनों के बारे में बात करेंगे. शुरुआत करेंगे with the कोलकाता एंड लखनऊ गेम. वेरी क्लोज गेम. राइट एट द वेरी एंड लास्ट ओवर में 24 रिक्वायर्ड था. But Rinku and Harshit Rana couldn't finish it off. Uh, Kushagra, what do you make of that game? Run Feast, how was it? It was a better game of cricket than the evening game, I believe, because it was closely contested. I said last in the last video as well, I said कि Marsh से expected नहीं था the way he has performed this season. I think he has outperformed this season. This was his fourth 50 of the season, if I'm not wrong. And Markram के साथ उसने अच्छी start दी लखनऊ को, and then Pooran the way he batted, he's been brilliant throughout the season. So I believe KKR की bowling is a problem for them at the moment because they're expecting a little too much from Sunil Narine at the moment, and they're expecting Varun Chakravarti to pick wickets for them, 2 to 3 wickets from him every game, which is not going to happen every time. So I think they have to have a plan in place where they give role clarity to their bowlers कि कौन सा बॉलर पावर प्ले में डालेगा, कौन सा डेथ ओवर्स में डालेगा, जो अभी प्लानिंग दिख नहीं रही है उनकी तरफ से. बट ओवरऑल अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट. रहाने बैटेड ब्यूटिफुली. नारायण गेव अ गुड स्टार्ट इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, बट देन आई थिंक नारायण से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं ओपनिंग करते टाइम, तो आई थिंक दे हैव टू लुक बियॉन्ड नारायण एज एन ओपनर. राइट नाउ इट्स हाई टाइम. Naman Mehta, do you think Lucknow breathed a sigh of relief? Actually, they did, given that the start that they had. Firstly, I did not understand the choice of playing six overs of fast bowling in the power play when KKR was going all guns blazing. They gave away 90 for one or something like that at the end of the power play. So obviously there was a lot of pressure. So I think उन्होंने जो win निकाली है, that was quite a great comeback. पहले तो हमने देखा कि जैसे रवि बिश्नोई बॉलिंग करने आए तो काफी मिसफील्ड हो रही थी, काफी कैचेस भी छूटे लखनऊ के तरफ से. तो बीच के जो 3 ओवर में जब रवि बिश्नोई और दिग्विजय राठी ने गेम पुल बैक किया, जहां पे दे रिमूव्ड अ कपल ऑफ बैट्समैन ऑफ केकेआर, तो दैट मोमेंटम चेंज वाज क्वाइट बेनिफिशियल बिकॉज फिर गिवन दैट रिंकू सिंह भी कुछ ज्यादा खास फॉर्म में है नहीं, और एंड्रे रसेल से भी हमने इस साल कुछ ज्यादा फायरवर्क्स देखे नहीं है, तो ऑब्वियसली प्रेशर था उन पे. पिछले 3-4 ओवर में 50 रन की जरूरत थी, और सिर्फ दो अ, कामयाब बैट्समैन जो पास में रहे वो थे, दैट इज रिंकू सिंह एंड रसेल. सो ऑब्वियसली प्रेशर वाज देयर, बट आई वुड लाइक टू हैव सीन मोर, आई मीन मोर कॉमन सेंस फ्रॉम ऋषभ पंत फ्रॉम बिहाइंड द स्टंप्स. एक दो ओवर दिग्विजय राठी की शायद उधर डलवा सकते थे पावर प्ले में, या रवि बिश्नोई की, और बॉलिंग चेंजेस कुछ अच्छी तरीके से कर सकते थे. मुझे ऐसा लगता है that KKR would look back as a missed opportunity. करेक्ट. 90 for 1 at end of power play. वहां से they should have won with probably an over to spare. But somehow they jinxed it. Uh, but credit to the way Lucknow has bowled. They have pulled things back, and at this stage in the tournament, a win is more important. करेक्ट. या तो विन है या तो लर्न है. अभी केकेआर का तो लर्न ही चल रहा है. सो बट आई थिंक लखनऊ सिर्फ वुड बी हैप्पी. एक चीज बोलूंगा. आई थिंक फ्रॉम द विकेट ऑफ वेंकटेश अय्यर, obviously it was not an easy pitch to come in and start hitting after the 15 overs. मार्क तो फर्स्ट इनिंग्स में भी देखा कि जैसे ही डेविड मिलर या कोई आया था तो दे वर नॉट बीइंग एबल टू हिट फ्रॉम बॉल वन. तो द रोल ऑफ हैविंग दैट सेट बैट्समैन जो निकलेश पूरन ने फर्स्ट इनिंग्स में निभाया,
If Venkatesh Iyer had continued for another 3-4 overs, maybe till the 18th over के end तक तो शायद रिजल्ट कुछ और हो सकता था. But One overall, a more thing great that game. Yeah, See, yeah, one Kushank. more thing that I would like to highlight is that because Narine is opening, that is, I think, getting a bit too late for finishers like Rinku Singh, Ramandeep. उनके लिए बहुत लेट हो रहा है क्योंकि रमनदीप आज ठीक है, आज जल्दी आया बैटिंग पे, बट देन ही गॉट आउट ऑन द सेकंड बॉल आई गेस. एंड तुम अगर नारायण को ओपनिंग भेज रहे हो एवरी टाइम इज नॉट गोइंग टू गिव यू फ्लाइंग स्टार्ट. एंड उसका प्राइम एज आई सेड पहले भी कि बहुत पहले चला गया है. सो इट इज एडवाइजेबल टू मे बी ब्रिंग इन रहाने एज एन ओपनर ताकि उसको सेटल होने में टाइम लगे एंड देन रमनदीप रिंकू सिंह को फिनिश करने में टाइम मिले थोड़ा. बिकॉज फिनिशर है मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तुम फिनिशर से भी एक्सपेक्ट करो कि वो बॉल वन से आके चालू करे मारना. सो आई थिंक स्ट्रैटेजी थोड़ा वीक है केकेआर का. दे शुड लुक इनटू इट. ठीक है, they'll be playing Chennai Super Kings at Chennai, the next game that they play. Abhi, since we are speaking of prime players, let us come to the second match of the evening, which was Chennai versus Punjab. Uh, Again, high scoring game. 220 had to be chased by Chennai. They looked to be in the game for most part of it, but then it was way too many runs, is what I think. We'll come to details on that topic, but Priyansh Arya played a fantastic innings. And what happened is that once you drop his catch, he was on 73. It was a regulation catch. You drop the catch. Shashank Singh, उसका भी catch छूट जाता है when he was batting at 30 or 32. Shashank Singh went on to make 50. Priyansh Arya went on to make 100. The difference of defeat was 18 runs. So, Naman, what do you think? Fielding is the main reason. So I would like to say that when we say whenever we see 7 as a figure, we see Thala for a reason, right? So this time I'll go on to say Kohli for a reason. So yeah, but honestly, yeah, jokes aside, I think their game plan was quite shattered. I would say, bringing their best death bowler or whatever bowler it is, it was their death today when they brought on Pathirana at the in the 13th over. I think they could have done well if he had come in the 9th or the 10th over. But again, I would not give that much to Ruturaj Gaikwad because अश्विन ने वही टाइम पे 2 विकेट निकाली थी मैक्सवेल और I think कौन था नेहल Nehal वधेरा. Vadera. Yeah, so he had removed those 2 wickets. So obviously, as a captain, you would want him to continue, but obviously he was taken down for too many runs. और जितनी भी कैचेस छूटे आई थिंक नूर अहमद ने एक छोड़ा और सबसे गंदा कैच तो रचिन रविंद्र ने छोड़ा था जो बहुत बहुत ईजी था और उसके वजह से आई थिंक बहुत रन पेले गए. इवन सो मुकेश चौधरी जो या 73 पे ड्रॉप हुए. सो आई थिंक अगर बात करें कि फील्डिंग कहाँ इंप्रूव हो सकती है, ऋतुराज गायकवाड़ ने खुद प्रेजेंटेशन में बोला कि इन द लास्ट 3 मैचेस वी हैव नॉट फील्डेड एज पर द लेवल्स दैट वी वांट टू. तो जिसकी वजह से ऑब्वियसली दे आर गिविंग अवे मोर देन 20-25 रन एक्स्ट्रा विच इज अफेक्टिंग देम. हर बार वो लोग क्लोज आके हारते हैं. हम लोग हर बार धोनी पे रीजन डालते हैं कि धोनी क्लोज लेके आता है पर फिनिश नहीं कर सकता. पर तुम्हारा फिनिशर तब फिनिश करेगा ना जब तुम रन थोड़े से कम दोगे. अगर तुम हर बार इतने ज्यादा और वो आता भी इतने बाद है कि 12-13 का ऑलरेडी रन रेट चल रहा होता है. Kushagra, 5 games, 5 times Chennai has chased. They have not batted first. ठीक है. Do you think they have any positives from this game? पॉजिटिव तो अभी मेरे को एट द मोमेंट आई कैन पॉइंट आउट ओनली वन. बिकॉज सी इन अ टीम ऑफ प्लेयर्स वेयर यू हैव अ यंग कैप्टन, यू हैव प्लेयर्स प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट. शिवम दुबे है, रचिन रविंद्र है, डेविन कॉनवे है, एंड स्टिल इफ धोनी इज योर बेस्ट क्लीन हिटर ऑफ द बॉल देन देयर इज अ प्रॉब्लम. मतलब धोनी लास्ट में आता है. वी जोक्स असाइड, धोनी ऐसा बोलते हैं लोग कि अच्छा नहीं खेलता, बैटिंग नहीं कर पाता वो स्ट्राइक रेट पे, बट ही स्टिल हिटिंग द बॉल वेरी फाइन आई बिलीव. एंड सबसे अच्छा वही बैटिंग कर रहा है चेन्नई के डगआउट में. जो प्रॉब्लम एट द मोमेंट चेन्नई फेस कर रही है, 4 प्रॉब्लम्स: टॉस, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग. सभी सारे बोल देते हैं. डिपार्टमेंट्स में सारे डिपार्टमेंट्स में वो लोग कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं. सो देयर इज अ प्रॉब्लम. I've just received a message from my dear friend Naman Shah. He says that MS Dhoni needs 22 runs to be CSK's second highest run scorer
in IPL 2025. Absolutely shameless batting unit. अब इस पे मैं क्या बोलूं, अगर Yeah, अगर तुम्हारा टॉप ऑर्डर nothing. परफॉर्म नहीं कर रहा तो यू कांट विन, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विद मुंबई इंडियंस राइट नाउ। उनका टॉप थ्री फाइव नहीं कर रहा है, वो नहीं जीत पा रहे। द टीम See, if जिसका टॉप CSK थ्री, win the toss, if CSK win the toss in the next game or in the coming games, what they should try and do is पहले batting कर लो, because clearly you're not able to chase a target of 180 plus. So that is a problem. You need to strategize over it. Till that time, just bat first, put up runs on the board, and see if you can defend the total. Let's talk about the positives of Punjab Kings. Uh, 8 overs in the first innings, score was 83 for 1. Sorry, 83 for 5. I'm sorry, it was 83 for 5. In the next 12 overs, they went on to score 132 for the loss of 1 wicket. आई That थिंक is where the game changed. मतलब गेम चेंज व्हेन लास्ट ईयर धोनी डिसाइडेड टू क्विट कैप्टेंसी, बट ठीक है। सो अगर सिर्फ नॉर्मल बात करें तो ठीक है, आई वुड अग्री कि प्रियांश आर्य ने काफी अच्छे रन्स बनाए, बट ही वाज वेरी वेल सपोर्टेड बाय शशांक सिंह टू टुवर्ड्स द एंड। और मार्को येंसन ने भी काफी काफी अच्छी हिटिंग करी, क्लीन हिटिंग थी मैंने जितना भी देखा। उनका एक हाथ बल्ले से छूट रहा था फिर भी सिक्स क्लियर हो रहा था। सो ऑल इन ऑल इट वाज अ वेरी गुड टीम परफॉर्मेंस। और अगर बॉलिंग की बात करूँ, द I know the commentators did not like Yuzvendra Chahal being not giving, like not getting into the attack before the 17th over, but it was a very tactical call because पहले 8 ओवर में शिवम दुबे नहीं था, और जैसे ही चहल की बॉलिंग करने की टाइम है शिवम दुबे आ गया, एंड given that CSK needed a lot of sixes, शिवम दुबे had to be peppered with those short balls, और स्पिन होता तो ठुक 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 जाता उसको। तो मतलब सेंस नहीं था, तो वेरी गुड कॉल। सो ऑल इन ऑल गुड कैप्टेंसी, गुड फील्ड प्लेसमेंट, और कैचेस पकड़े पंजाब ने, सो दैट वाज अ पॉजिटिव। Vishagra, positive for you? Certainly. I mean, if you're down for 83 for 5 and then you go on to score a total of 200 plus, almost 220, you have done something. You have done something right. So, a lot of positives for Punjab in this game. Despite Shreyas not scoring runs, Priyansh Arya stepped up. Shashank Singh finished the innings the way he always does. So, all in all, a good game from Punjab. Bowling भी बहुत अच्छी थी उनकी, काफी अच्छी थी. I just think that they'll still introspect and look into the form of the players. Maxwell's Stoinis, they are not amongst the runs. Prab Simran तो क्या ही कर रहा है, मतलब आई डू नॉट अंडरस्टैंड. ही हैज प्लेड वन गेम, उसके अलावा ही इज नॉट लुक्ड इन एनी सॉर्ट ऑफ टच. अगर प्रियांश आर्या ने आज ऐसी इनिंग्स नहीं खेला होता तो मे बी 150 भी शायद नहीं होता. We would be having a different conversation. So I still think there is scope for improvement. And Punjab Kings, being the team they are with Ricky Ponting, they'll have a hurdle and they'll definitely speak on these topics. But overall, good captaincy by Shreyas, well ग्रेट। deserved victory. Very good. And Chennai need to rectify their errors or they'll keep being in the bottom three.